First question is, according to latest news, area under cultivation, cotton cultivation in Punjab dropped by dash in 2021. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर वैसे ही शो हो रहा है 7%। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। द किंग ऑफ किंग्स चर्च इनॉग्रेटेड इन पाकिस्तान ऑन। हाँ जी, सारे लोग पार्टिसिपेट किया करें, बताएं जी। एक स्टूडेंट 3 जनवरी का है। नेक्स्ट कोई और स्टूडेंट बताए। डिस्कशन का मतलब आपकी पार्टिसिपेशन, आपको इन्वॉल्व करना होता है। हमने एक पूरा लेक्चर डिस्कशन 3 सितंबर का, जनवरी, नॉर्थ नाइजर, एब्यूजा, बाकू, नन। Abuja is the correct option. Abuja is the correct option. Okay. Capital of UK is, UK United Kingdom का कैपिटल क्या है? Capital of UK is London. London is the capital of United Kingdom. ब्रिटेन डोमेस्टिक स्पाई एजेंसी, बरतानिया की स्पाई एजेंसी कौन सी है? MI5, MI7, MI9 और नन। The correct option is MI5. G77 is the coalition of how many countries? हाँ जी, it is the coalition of 134 countries और ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तरक्की याफ्ता नहीं, तरक्की पजीर ममालिक। ठीक है। Then is the length of Pakistan stream gas pipeline project. In kilometers length बतानी है। हाँ जी, 1100 kilometer is the length of Pakistan stream gas pipeline project. Capital city of Peru. Lima. Lima is the capital city of Peru. Then is the very important question, National Day of Australia. हाँ जी, January is the right option. Then is the NPSL established in? It was established in 1974. Income tax ordinance was passed in? ITO जिसको कहते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, पास हुआ 2001 में। ठीक है, it was passed in 2001. Defamation ordinance was passed in?
हाँ जी, डिफेमेशन ऑर्डिनेंस वाज पास्ड इन It was passed in 2002. According to survey, only -% of Balochi population has access to clean drinking water. The correct option is 0.3%. बलूचिस्तान की कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ बलूचिस्तान, the correct option is 750 kilometer. Red Square is a building located in Russia. Then is the Queen Elizabeth II on Feb 6, 2022 became the first British monarch to reign for how many decades? 7 decades. It's mean that for 70 years, okay, and still continue. 70 years हो गए इसको. फर्स्ट ये ब्रिटिश मोनार्क है जो 7 डिकेड्स तक हुकूमत कर रही है, रेन कर रही है. ठीक है, हुकूमत सिंबॉलिक है, वैसे इधर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही होती है. तो ये था जी आपका आज का क्विज.